Good afternoon to all of you. Welcome you all in our value-added course, Human Right, a General Perspective. Today, 10th day of this value-added course. So we are continuously we are studying about the what is human right in Indian perspective, and other another discourses what is another discourses of the human rights. So today we have Mr. Anil Kumar Singh. He is going to explain about the person with disability and what's the right of physical disabled person. So the continuation program from tomorrow to till today, he's covered about, and largely he's covered about the what is the physically challenged people's rights. So welcome Anil sir, and he is going to explain about this topic. Thank you. Thank you so much, Dr. Snehlata. Thank you so much, Dr. Snehlata. Student, I would like to say that I was uh, I was recontinue for the physical disabled rights. So that yesterday class I was justified for meaning of physical disabled, how to mention for physical disabled to in United Nations and European Union says that something that is why to adopt to the Indian Constitution to the physical disabled rights behalf of the behalf of the similar for the human being, so that we have discussed to the types of disabilities, so that physical disabilities and mental disabilities. Again, we have discussed about to continuously process for the to the government produce for the how to generate for the physical disability rights for the work permission to the constitutional law since to the political rights in social reference social platform. So that student we have discussed about to now, right, right to physical disabilities. So that we have discussed to on
The some topic are right to work. Student, we have discussed about to yesterday class to right to work to how to introduce for the right to work in Indian Constitution, so that mainly a basic knowledge for your now, so that right to opportunity to the related for the equal of the rights for the any disabled person, so that we have to now to begin or the instruct for the recognized, that is the Indian Constitution to the related on the article R 27 to the mainly instruct seated to the recognized to the right of the person with disabilities to work on an equal basis with others. This is includes the rights of opportunity to gain a life by work freely chosen or to the accepted in labor market and work environment that are open, inclusive and accessible for the person with disability. इट इज द मेंशन, मैंने आपको क्या बताया था कि, और मैं बताने भी जा रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक आर्टिकल 27 है उसमें बता दिया गया था कि किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक विकलांगता के अधिनियम के साथ या विकलांगता के धारा के साथ इसमें जोड़ा जाए, ताकि इसमें सभी को एक समान अधिकार दिया जा सके। वे अधिकार जो कहीं न कहीं से एक काम करने के अधिकार से, राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार से दिया जाता है। इस अधिकार में विकलांग व्यक्तियों को काम करने के अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाते हैं, वैसे भी इनको भी इक्वलिटी, इक्वल बेसिस के आधार पे इनको भी दिए जाते हैं, जिसमें ये अपने काम को या अपने अपने जो जो भी राइट्स है अपने मार्केट में जाके काम करें, एक माहौल को एक तरीके से बना सकें, अपने जो काम को इनको करना है अपने आप से उसको चुन सकें, एक तरीके से स्वेच्छा के अधिकार के साथ इसमें एक रिकॉग्नाइज्ड कमिटी के साथ एक सुलभता के साथ एक इंक्लूसिव मतलब एक समावेशी शिक्षा के साथ देने का प्रावधान किया गया है। Some are the very various structure for the right to work to the acknowledgement for Article 27 to the very hardly instruction to the all person in India, so that began to work are the a big opportunity for the human being related on the disabled person। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में भी हमें कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है। राइट टू इक्वालिटी, सो हम यहाँ पर कैसी राइट इक्वालिटी की बात करते हैं, वह वो इक्वालिटी की बात करते हैं जो हमें स्वतंत्र छोड़ता है। जैसे हम आज क्या हैं, सभी एक समान स्वतंत्र हैं, उसी तरीके से राइट टू इक्वालिटी की यहाँ पर बात की जाती है। उस इक्वालिटी की बात करते हैं जो किसी भी डिसेबल पर्सन को एक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता हो, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता हो, उसे दिशा निर्देशन देता हो, उसको सिक्योर करता हो, which have to introduce for the instruct to the granted permission for the right to the disabled person, liberty and security for the person are the constitutional law, so that we consider the right to liberty to be granted for person with disable if they are the explicitly granted to the right of freedom or liberty। यहाँ पर हम उनके अधिकार की गारंटी की बात करते हैं जो विचार के साथ, एक अन्य अधिकार के साथ, एक कैपेबिलिटी के साथ, एक कैपेसिटी के साथ वो कर सकते हैं। एक एक सिनेरियो के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि हालांकि हमारे संविधान के एक संविधान में भी एक प्रावधान
दिया गया है, जिस प्रावधान के साथ हम कहीं ना कहीं से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर जो एक उन 99% लोग जो हैं इस संविधान के साथ अपने मानसिक स्थिति या मानसिक स्वस्थ व्यक्ति हैं, वे अपने अधिकार से कहीं न कहीं से वंचित हैं, उन्हें भी अपने अधिकारों को एक दिया जाना चाहिए, so that the globally platform on the behalf of the states to the consideration for the expressly for the guaranteed rights of to the liberty with the disabled person to the however the 19% of people cannot be adopted to the right and functioning the constitutional order, so that we have very challenge in India to the relevant are the given are the person who have disabled to the right of opportunity, the person with the mental health and condition, so that right to freedom of expression, so that right to freedom or expression, it is the very surely for the opportunity for the Indian Constitution take the major differences part are the Indian Constitution. These are the mention on Article 21. Article 21 to take all appropriate measure to the ensure that the person with disable can exercise that right to freedom or expression and opinion to the inclusive for the freedom seek serious and the impact information and ideas on the equal basis, so that 9 अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में भी यह सुनिश्चित करने की बात की गई है कि जो विकलांग व्यक्ति है, जो विकलांगता के साथ है, वे क्या कर सकते हैं, अपने अभिव्यक्ति की आजादी। हम क्या करते हैं, अपने अभिव्यक्ति की आजादी कर लेते हैं ना, उसी तरीके से विकलांग व्यक्ति भी अपने अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अपने आप को कहीं न कहीं से मौजूदा हालात के संग जोड़ने की कोशिश करता है। ये उसका अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूप से एक प्रयोग में भी लाया गया है। उस प्रयोग के साथ कहीं न कहीं से उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि अपने राइट्स को जाने, अपने राइट्स को समझे और उसे समाज के सभी के साथ एक साथ रख करके समाज के सभी गतिविधियों में अपने आप को क्या करे, भागीदारी के रूप में रखे। वो दूसरों के समान जो अधिकार दिए जा रहे हैं, जो दूसरों को अधिकार दिए जा रहे हैं, वे अधिकार क्या हैं? वे अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से उनको कहीं न कहीं से दिए जाने चाहिए। ये उनके एक कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो उनको देने के लिए सरकार भी बाध्य है और उनको मिलना भी चाहिए। अब इसके साथ ही कहीं न कहीं से ऐसी स्वतंत्रता की प्राप्ति भी उन्हें मिलनी चाहिए जो उन्हें पसंद भी आना चाहिए। अगर वे कमज़ोर वर्ग के हैं या कह सकते हैं कि अगर वो ऐसे समान व्यक्ति के समान नहीं हैं, जो कहीं न कहीं से कमज़ोरी सिद्ध करती है, तो ऐसे व्यक्ति से भी कहीं न कहीं से उनको ऊपर उठाने के लिए ही क्या करना चाहिए? एक एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेबल पर्सन इन इंडिया। अब हम भारत में डिसेबल पर्सन के अधिकार कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में डिसेबल पर्सन का नाम आते ही हमारे पास क्या जाता है, एक अलग सी एक छवि हमारे पास बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अक्षुण्ण है, नहीं कर पा रहा है, हम उसे विकलांगता की श्रेणी में लेते हैं। जैसा कि यूएन एक ऑर्डर में या यूएन आर्टिकल या यूरोपियन यूनियन आर्टिकल में दिया गया था, सेम कंडीशन है इंडियन सिनेरियो में भी कि राइट टू डिसेबल पर्सन इन इंडिया, यहाँ पर भी उसी कंडीशन के साथ ही उन्हें जोड़ने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार क्यों दिया गया? यह अधिकार 1995 में डिसेबिलिटी राइट्स के अकॉर्डिंग इसे रखा गया। आपको मालूम है कि हमारे कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर या एवरेस्ट के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं
जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अपने आप को रखा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अपने आप को उस आयाम तक पहुंचाया जो हमें उनके राइट्स तक पहुंचाने थे, या हमें हमें हमने सोचा भी, हमें कल्पना भी नहीं कर रखी थी। हम लोगों ने देखा कि पैरा पैरा ओलंपिक भी कराए जाते हैं, एक वर्ल्ड ऑर्डर पे, वर्ल्ड सिनेरियो पे, एक नेशनल लेवल के गेम भी कराए जाते हैं, पैरा नेशनल लेवल। ये सब क्यों कराए जाते हैं? एक इक्वेलिटी के साथ कराए जाते हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, सरप्राइज होंगे कि ओलंपिक से ज्यादा मेडल हमारे पैरा ओलंपिक में हमारे देश के लोग लेकर के आए। ये क्या है? एक बिग अपॉर्चुनिटी के साथ है। वो चाहे वो शूटिंग का कैरियर रहा हो, चाहे वो गेम्स में किसी भी उस पे रहा हो, चाहे तीरंदाजी रहा हो, चाहे शूटिंग रहा हो, any one game for the big opportunity in India to the goal of the major medals to the game. A person with disable are one of the most neglected sectional our nations. विकलांग व्यक्ति हमारे देश के सबसे उपेक्षित वर्ग में से एक है। यह एक समाज की सरासर उदासीनता के कारण है। दिस इज द ड्यू टू अ शीट डिफरेंस फॉर द सोसाइटी। ऐसे लोगों को अस्वीकृत और प्रतिशोध के अधीन करता है। विच सब्जेक्ट सच अ पीपल ऑफ द डिसऑर्डर एंड द एंटीपैथी। It is the very shame the part are this year in Indian scenario. That is the ऐसे लोगों के पास विभिन्न भारतीय कानूनों के साथ भी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी बहुत सारी चीजों के अधिकार दिए गए हैं, जिसका भारत में पालन किया जाता है। जो एक विकलांग व्यक्ति के साथ उसकी अधिनियम 1995 की धारा 2 के तहत विकलांगता के अधिकार को देता है और समाज के अंधापन को दूर करता है। Such a people have a several rights under the various Indian law as well as UN conventions that is the followed in India. I remember you. The under section R21, the Person with Disable Act 1995 disability included the blindness, law, vision, and leprosy, hearing, impotent disability, mental and the mental illness. यहाँ पर ऐसे चीजों को भी बताया गया है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? उस अधिनियम में विकलांगता के कोई अगर नहीं देख पा रहा है, वो या जिसकी कम दृष्टि है, वो कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनको, या जो 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 सुनने में अक्षुण है या असक्षम है वे, और जो चलने फिरने में काम करने में अक्षम है उनको, या एक तरीके से मानसिक रूप से जो रूप से बीमार व्यक्ति है जन्म से, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं से डिसेबल पर्सन के रूप में इंडिया में रखा गया है। These are the purpose are Indian to the Act of the 1995. Includes blindness, low vision, leprosy, curd, hearing impairment, locomotor disability, mental relation or the mental illness. These are the various purpose are the disabled person. आपको एक हैरानी की बात और होगी, मैं बता देता हूँ। डिसेबल पर्सन में आपको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सर्कस आप लोगों ने देखा होगा, सर्कस में आप लोगों ने बौने को देखा होगा, बौने को जो बहुत हंसाता है, उछल कूद करता है और कहीं ना कहीं से लोगों के संग अपने आप को इन्वॉल्व करता है, देखा है ना। तो 2019 में 18 के लास्ट में 2019 में ऐसे पर्सन जो बौने हैं उनको भी एक तरीके से डिसेबल पर्सन के रूप में उनको भी रखा गया है। और सोचिए, बौनों को भी एक तरीके से अधिकार के रूप में रख दिया गया। अभी तक ये उन अधिकारों से क्या थे? वंचित थे।
अब ये भी क्या है, एक डिसेबिलिटी के पर्सन के साथ ये भी उन अधिकारों के संग शामिल हो रहे हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब आपको ये होगा कि आखिर ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता क्या है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब वो है जो हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति है, सपोज दैट वो डिसेबल पर्सन है, वो हमें दिख भी रहा है कि वो डिसेबल है, लेकिन हम उसे एक तरीके से एक साथ एक पायदान में या एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर के साथ तभी उसको सारे सिस्टमेटिक वे से उसको रख पाते हैं जब वो उसका प्रूफ लेता है, जब वो उसका सर्टिफिकेट लेता है। सपोज दैट आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, लेकिन उस पढ़ाने का, उस लिखने का, उस बोलने का जो एक क्राइटेरिया रखा जाता है, वो क्राइटेरिया किस पे आता है? आपके सर्टिफिकेट पे, कि आपने प्राइमरी पास किया है या सेकेंडरी पास किया है, मिडिल पास किया है या हायर सेकेंडरी या एक हायर एजुकेशन लिया है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे क्या होती है, उस के साथ आपके उस सर्टिफिकेट के साथ ही आपको उस पर इन्वॉल्व किया जाता है। Involved to the graduate certificate, graduate degree। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है। देयर इज द मोस्ट बेसिक document are the disability certificate to the every person who have involved to the disability criteria, so that ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है कि जो डिसेबिलिटी की विकलांगता के दो दस्तावेज हैं वो भी उन लाभकारियों तक होना चाहिए जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से इन्हें अपने अपने आप अपने एक कह सकते हैं सिनेरियो के साथ रखते हुए, एक सिस्टम के साथ रखते हुए इनको अंडरटेकिंग के साथ एक सर्टिफिकेट जनरेट करती है। वो सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरीकों से दी जाती है ताकि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को मेडिकल फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में उसे एक तरीके से कह सकते हैं स्पेशल क्राइटेरिया के संग रखा जाए, उस स्पेशल क्राइटेरिया के साथ रखा जाए ताकि वो अपने आप को उस पॉलिसी के साथ, उस गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को क्या कर सके, एक तरीके से पॉजिटिव वे में ले सके। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर कम सुन रहा है, कम देख रहा है, सबको दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने भी एक मिनिमम क्राइटेरिया को इसमें डिसाइड किया है। वो डिसाइड क्या है, 40% डिसेबिलिटी। अगर आपकी डिसेबिलिटी अगर 40% से एबव है तो आप उस डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया को अपने आप में आप एक तरीके से पा सकते हैं। So that the state and medical grant established under the state government can issue the disability certificate to any person with the more than 40% disability disorder to the anyone to the person or the involved in the Indian constitution or the medical illness, so that disability pension,
डिसेबिलिटी पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डिसेबिलिटी पेंशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन? अब डिसेबिलिटी पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो विकलांगता पेंशन जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिसमें कि 80% के साथ जो डिसेबल पर्सन होगा who can be adopt to the generation or the suffering from the disability from to 80% to the living process are the people who have introduced the pension under the Indira Gandhi National Disability Person Scheme and other scheme to also to near about to their are state and central government. Firstly, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme. Secondly, many pension scheme are the state government to the following criteria for the disabled person who have involved to the cultural event, social event, political event, and educational event. It is the also for the generated to the state government and central government. यहाँ पर क्या है? 18 वर्ष से जो व्यक्ति ऊपर है वो क्या है, और 80% तक डिसेबल है, वो क्या करता है? वो इंदिरा गांधी डिसेबल पर पेंशन की स्कीम के साथ उसे रखा जाता है, उसे हकदार होता है वो, ताकि उसे उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व करके हम इसे एक तरीके से सस्टेनेबल रूप से उसे एडॉप्ट करके रखा जा सके। और कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे वेरियस एनजीओज भी हैं जो हमें क्या करते हैं, इसके लिए हेल्प करते हैं, डिसेबिलिटी को साथ जितने भी हैं उनके लिए भी हेल्प करते हैं। कोई व्यक्ति विकलांग है तो विकलांगता को के पेंशन को प्राप्त करने के लिए मदद भी करते हैं। various various NGOs are the dedicated to the to this because they help such person with disabilities to the get their disability pensions। जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट ऑन द रोजगार, सरकारी नौकरी में भी विकलांगता के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं। इन गवर्नमेंट जॉब 3% of the seat are the reserved for the person with disability, so that it is the very harmful, very humbleful for the government to to the required for the 3% or seat for the reserved category for the disabled person. It is the very impressive decision for state government. It is the very helpful for the state government. It is the very helpful thing or idea for the state government to the scenario or to the relevant or the central government. Income tax concession, very important part are the disabilities to the rights are the income tax concession। who has person to involve disable, यदि कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो क्या करता है, अंडर सेक्शन 80 डीडी और 80 यू पर इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के साथ वो पर्सन डिसेबल है तो क्या करता है, उसे इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। वे छूट जो एक कॉमन सिटीजन को दी जाती है उससे कहीं ज्यादा उसे छूट दी जाती है। यही कारण है कि कहीं न कहीं से व्यक्ति के अधिकार को एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कह सकते हैं धारदार हथियार के रूप में यूज किया गया है, जिसे कोई टच नहीं कर सकता। अगर कोई इसे हटाना भी चाहे तो क्या होगा, उसके हाथ कट जाएंगे उस धारदार हथियार से। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी तो दी गई है, लेकिन
वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, लोअर हाउस और अपर हाउस के अकॉर्डिंग रखी गई है, तभी उस फ्लेक्सिबिलिटी को पूरा किया जा सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, जैसा मैंने बताया 1995 में जो एक्ट आया था, डिसेबिलिटीज एक्ट, जो इंडिया के, आपको मालूम है कि 1995 के पहले जो हमारे यहाँ विकलांग व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें किसी भी तरीके के प्रावधान के साथ या किसी भी तरीके से उनको छूट नहीं दिया जाता था। उस समय जो छूट दिए जाते थे वो 80% जो डिसेबल पर्सन हुआ करते थे या 60% डिसेबल पर्सन हुआ करते थे उनको दिया गया, लेकिन जब 40% का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1995 में ही लिया गया। वो कैसे लिया गया, ये उसको एक तरीके से कह सकते हैं एक निर्बाध्य के रूप में, एक बिना बाधे के रूप में लाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि 1995 में इसे लाया गया और 7 फेब 1996 को इसको कहने इसी से लागू कर दिया गया। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 had come into the enforcement on Feb 7, 1996. It is the significant step which does ensure equal the opportunities for the people with disability and their full participation in the national building. जो विकलांग लोग किसके लिए समान अवसर के साथ देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, यही वे अधिनियम है जो उन लोगों को पुनर्वास की भी एक तरीके से पहलुओं में भी बात करता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिजर्वेशन, रिसर्च, मैन पावर डेवलपमेंट एंड rehabilitations. After all, there are the very fact conditions are to the act are provided for the person with disabilities act 1995। वो शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ, व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ, आरक्षण के साथ, अनुसंधान के साथ और इसके साथ साथ जनशक्ति विकास में भी शामिल हो सकता है। जो कोई भी विकलांग व्यक्ति हो जिसे एक पुनर्वास के साथ भी उसे दिया जाए, उसे एक तरीके से एक सांचे में रखा जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, वैसे व्यक्ति को अलाउंस फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, उसे एक भत्ता भी मिलने का अधिकार है, जैसा कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 में इसको रखा गया है। मैन मेन प्रोविजंस फॉर द एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट के रूप में, प्रोविजंस के रूप में कौन से ऐसे अधिनियम हैं कि जो मुख्य के प्रावधान हैं, जैसे बात करें कि प्रोविजन एंड द अर्ली डिक्टेशन ऑफ द डिसेबिलिटीज, निशक्तताओं की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। सबसे हमने क्या बताया, जैसे हमने बताया आपको कि अभी कोई व्यक्ति हो, उसका उसका हाथ ना हो, उसका एक आंख ना हो, तो क्या है, हम एक सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ वाकई में उसका एक हाथ नहीं है, उसका एक आंख नहीं है, तभी क्या है हम मान लेते हैं कि वो डिसेबल पर्सन है और काम करने के लिए कहीं ना कहीं से हम उसको क्या करते हैं कि हम उसे अपने आप में रखते हैं। अब इसमें क्या है, मेन प्रोविजन फॉर एक्ट, इसका जो एक्ट बनाया गया है इसका प्रोविजन क्या है, मेन यही है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनकी रोकथाम की जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए, इनको इनको पहचाना जाए, इनको समझा जाए, ताकि जो डिसेबिलिटीज के प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जा सके। सेकंड, एजुकेशन, शिक्षा, जैसे मैंने बताया कि राइट टू इक्वलिटी के साथ आर्टिकल 21A, राइट टू इक्वलिटी टू द अकॉर्डिंग फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, these are the perspective under process for the every persons and every man and every children are
the in, involved to Indian continental Indian scenario. So that firstly education, secondly employment, रोजगार, रोजगार के लिए भी यहाँ प्रोविजन बनाए गए हैं। तीसरा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव, मतलब भेदभाव विहीन। हम क्या करते हैं किसी से, आज हमारे सामने कोई अपाहिज रूप से घूमता है, हम उसे बहुत ही क्या देखते हैं, बहुत ही नरम भरी आंखों से देखते हैं, हम बहुत ही उसे एक तरीके से गम भरी आंखों से देखते हैं। हमें ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए बताती है कि आप उसे नम भरी आंखों से न देखें, आप उसे कमजोर आंखों से न देखें, आप उसे अपने समान देखें, अपने आप अपने समान काम करने की क्षमता के साथ देखें। तभी तो वो पर्सन अपने आप को एक इक्वालिटी के साथ रखेगा। अगर हम भेदभाव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो वो पर्सन स्टार्टिंग से ही स्टेपनी के रूप में अपने आप को देखता रहेगा। सोशल सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल सिक्योरिटी, social security may be a indication of the social environment. Social environment to the represent are firstly to the familiar environment, to the neighbor environment। हम सबसे पहले सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अपने पारिवारिक परिवेश की बात करते हैं, अपने पड़ोस की परिवेश की बात करते हैं। तभी हम क्या करते हैं, अपने आप को एक सोशल इन्वायरमेंट के साथ रखते हैं। उनके साथ भी जो मेन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल के रूप में बनाया गया है, उसमें सोशल सिक्योरिटी की भी हम यहाँ पे बात करते हैं। जब तक सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं की जाएगी, और सोशल सिक्योरिटी को तभी किया जा सकता है जब अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, तो जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक हम सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अनुसंधान और एक तरीके से जनशक्ति का विकास। अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है, हमें समझना होगा, हमें इस बात को ढूंढना होगा कि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, जब तक कि हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाएंगे, तब तक हम उनको क्या समझते रहेंगे, एक तरीके से स्टेपनी ही समझते रहेंगे कि हमारे बिना तो ये कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ये क्यों बनाया गया है कि सभी तक इनके पावर को पहुंचाना, सभी तक इनके पावर के जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसे बताना, ताकि ये अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। Grievance redress are the Charter abiding for Union of India, the Supreme Court। हम एक कह सकते हैं कि जॉर्ज इबार्डिंग ने भी बनाम भारत संघ के साथ एक शिकायत निवारण में भाग लिया, जिसमें कि न्यायालय ने लोकोमोटर के व्यक्ति को असुविधा और के साथ एक उत्पीड़न को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से दूर स्थानों के ट्रेन से यात्रा करते समय विकलांगता का सामना करना पड़ता है। वे व्यक्ति क्या है, एक अनुसंधान के साथ, एक अनुदान के साथ क्या करते हैं, इंडियन एयरलाइंस में या इंडियन लोकोमोटिव में या ट्रेन में अपने आप को शामिल करते हैं। वे व्यक्ति जो 40% या 80% के साथ अपने आप को विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। Grievances to the related or the Supreme Court to the discomfort and the harassment suffering by the person of the locomotor are so the disabled for the would be faced while the traveling by the train and the particular for the many kilometers to the one places to other places. These are the excuse the direction of the
Indian Airlines to the to the person suffering from the locomotor, so disabled for the existence for 40 to 80%. Very big opportunity for is here to the disabled person. The National Federation of the Blind to the यूपीएससी. अभी अभी मैं देखिए यूपीएससी की मैं बात कर रहा था. अब सोचिए यूपीएससी के एग्जाम में भी हमें क्या देखने को मिलता है. एक इनके विशेष तरीके से नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भी, जो लोक संघ सेवा आयोग के सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा है कि संघ लोक सेवा को नेत्रहीन व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और दिशा निर्देशित की जाए. वेरी वेरी कह सकते हैं वेरी हेल्पफुल फॉर हियर. The Supreme Court held that UPSC may be directed to the allow blind person for the appearing the examination for Indian administrative and allowed to the services. एनसीटी ने भी एक उच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा कि विकलांग जो लोग हैं, वो जो शरीर से अक्षुण लोग हैं, वो शिक्षा के लिए शिक्षक के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से सही है, भले वो शारीरिक रूप से अक्षुण है. अगर शारीरिक रूप से अक्षुण है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसे व्यक्ति को भी शिक्षक शिक्षा के साथ उसे रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. Very important role are the NCT in Delhi branch. So that in the government of the NCT, so that the High Court held the people with disable can be appointed as physical education, physical disorder teachers are the provided they have to pass the qualifying the examination undergoing on the requested training. These are the very important role are the NCT or the Delhi branch. So that पॉलिटिक्स इन इंडिया, अब सबकी बात करें और भारत की पॉलिटिक्स की बात ना करें तो कहीं ना कहीं से हमें एक लगता है कि हम राइट्स की बात कर ही नहीं रहे हैं. वे राइट्स जो हमें सबको देने के लिए दिया गया है, वे अधिकार सबको दिया गया है, जिसमें पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स इंडिया में पॉलिसीज इन इंडिया को इंक्लूड किया गया है. जहां पॉलिटिक्स होगा वहां पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं. वो कैसी पॉलिसीज? नेशनल पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006. वेरी इंपॉर्टेंट part are the national disability order in India, so that the 2006 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति को 2006 में लाया गया. क्यों लाया गया? क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षुण व्यक्ति को 2006 में विकलांग व्यक्तियों के साथ शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित चीजों को यहाँ पे जोड़ा गया. The government of India formulated the national policy for person with disabilities in Feb 2006, which deal with the physical education and economic development for the person with disabilities. हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं. नेशनल पॉलिसी के साथ कुछ रिकॉग्नाइज कमिटियां हैं, कुछ
रिकॉग्नाइज पर्सन है या रिकॉग्नाइज वैल्यूज हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स के साथ रखती है, जो किसी भी देश को कमजोर बना सकती है या किसी भी देश को ऊंचा उठा सकती है। जिसमें हम बात करते हैं मानव संसाधन की, मानव मूल्यवान संसाधन की, मानव मूल्य के संसाधन की। राष्ट्रीय नीति विकलांग व्यक्तियों को देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन मानती है। ऐसे लोग जो ऐसे वातावरण बनाते हैं जहां पे समान अवसर दिए जाएं, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए, समाज में पूर्ण भागीदारी दी जाए और जिन पहलुओं को ध्यान रखा जाए उन पहलुओं को भी रखा जाए। The national policy recognize the person with disabilities are the valuable human resources for the country. They have to the seek out the create any environment that provided them equal opportunities, protection for their rights. Some of the aspects which the policy focus on अब कुछ विकलांगता के ऐसे भी दिए गए हैं जो हमारे ओर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटीज। हम यहाँ पर क्या है, विकलांगता की रोकथाम के लिए हम यहाँ पर लेते हैं रिहेबिटेशनल मेजर्स, पुनर्वास के उपाय हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी के साथ दिखता है। विकलांग महिलाएं, विमेन विद डिसेबिलिटीज, इसके साथ साथ विकलांग बच्चे, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। ये क्या है, हमें एक समाज की ओर दिखाता हुआ, हमें एक ऐसे कमजोर वर्ग की ओर दिखाता हुआ दर्शाता है जो हमें क्या है, एक राष्ट्रीय विकलांगता नीति को देश के अंदर सभी पुनर्वास के साथ, मानव संसाधन के साथ हम एक ऐसे वातावरण बना सके ताकि हम इसे दूर करने के लिए एक उस प्रोविजंस को लाएं, उस प्रोविजंस के साथ एक इक्वलिटी को लाएं ताकि हम इसको दूर कर सकें। वुमेन हैव अ राइट टू जीरो। इसके साथ बच्चों मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से डिसेबिलिटीज को हम फॉलो करते हैं, हम किस तरीके से डिसेबिलिटीज को अपने स्ट्रक्चर के साथ लेते हैं और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोविजंस दिए गए हैं। वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से शारीरिक रूप से अक्षुण है, मानसिक रूप से अक्षुण है, या कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से वो अपने आप को कितना कितना उस प्रेशर के साथ अपने आप को कम पाता है, या कह सकते हैं उसके साथ गवर्नमेंट ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आती है जो उसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो सरवाइव कर सके अपने समाज में। वे ऐसे समाज के संग भागीदारी ले सके जो अपने आप में एक क्या कर सके कि अपने आप को एक डिसेबल होते हुए भी वो अनडिसेबल के रूप में अपने आप को महसूस बनाए। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे आर्टिकल बनाए जो स्पेशली कहीं न कहीं से डिसेबल पर्सन के लिए ही इन्वॉल्व के रूप में रखा गया है। और डिसेबल पर्सन के लिए आप लोगों ने देखा होगा जब 1995 का एक्ट आया, 2006 का एक्ट आया, और इस तरीके से हम कहें कि 2018 में भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। वो क्यों शामिल किया गया? जो लोग सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को पीछे पाते हैं, या समाज के ऐसे लोग जो अपने आप को गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे लोग ही को सरकार क्या करती है, आगे लाने के लिए करता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। एनी क्वेरी फॉर योर क्वेश्चन
given right now to a chat box. Thank you so much, student. काटेंगे वहां से हम लोग। हाँ। Some are the requirement are to the Dr. Savez and Dr. Snelata to the conversation are the module 1 and module 2 the to the briefly knowledge to how to the use are module 1 and how to the field to module 1 and 2, so that a few minutes to the request to the further the knowledge for the Dr. Snelata and Dr. Mohammed Sahbaz. अब काटिए। मेरा चलिए और आपको मॉड्यूल 1 खोल दिखाना चाहिए। Good afternoon, students. Thank you, Anil sir, for this ultimate knowledgeable lecture. So we have assignment for today. We have 5 units in this validated course: first and second and third and fifth. So there is in our ILI of Integral University ILI, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा एक लर्निंग सिस्टम है। सो आप एक एक यूनिट के साथ जाइए और पर यूनिट में देर इज अ डिस्कशन फोरम, देर इज क्विजेस, देर इज असाइनमेंट्स, देर इज अ क्वेश्चन पेपर. So everything is online. So you have to go through the this online pattern. Every modules have a question discussion forum, and you have to go into you have to do this work as soon as possible. So आप सब modules में खोल खोल के देखेंगे तो उसमें discussion forum रहेगा, डिस्कशन क्वेश्चन रहेंगे, क्विजेज रहेंगी, असाइनमेंट्स रहेंगे, उनको आपको करना है। तो इतने सारे असाइनमेंट्स आपके पास हैं और जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को कर लेंगे उतना ही जल्दी सारी चीज़ें आपसे आपके थ्रू हो जाएंगी और उतनी ही चीज़ें अपडेट रहेंगी, जिससे कि हम लोगों को भी बाद में फ़ायदा होगा। सो अभी हम लोग मॉड्यूल पे बात करेंगे कि मतलब किसमें कौन से मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हो चुकी है कि नहीं हुई हैं। सो लेट्स ओपन द ILI. First of all, I'll share my screen. Wait a 1 minute. Keep connected, please. Wait. Uh, and it's just mark the attendance, please, also.
Yes. So Ila is open and just share the screen first of all. Oh, screen is already shared. I just request you technical team, please share my screen. So if you go through the ILI, there is HP VAC 2201 Human Right General Perspective. So यहाँ से आपको जाना है और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द अटेंडेंस फर्स्ट. रोज रोज का आपको अटेंडेंस मार्क करना होता है. यहाँ पे आप अपने अटेंडेंस को मार्क करिएगा. और आज कितनी तारीख है? टुडे इज 20th May. Yes, attendance mark. But how many people are mark the attendance? First of all, मैं इसको चेक कर लेती हूँ. Then uh, then module 1, meaning, nature, scope and human right, understanding the concept of human rights, need and importance of human rights. So you have to go to this portion and just discussion forum module was there. आपको discussion forum को click करना है. Then यहाँ पे एक question add रहेगा. उस क्वेश्चन को जाके आपको डिस्क्राइब कर देना है. जो कुछ भी उसमें लिखा रहेगा कि मॉड्यूल 1 के रिगार्डिंग, तो उस पर आपको उस पर बात करना है कि डिस्कशन फोरम इज देयर. देन यू हैव टू गो टू द बैक. And after that there is a quizzes is right now is hidden, and assignment 1. So this is module 1 is this. और उसके बाद इसमें आपको फीडबैक भी भरना है. फीडबैक जब तक आपको आप फीडबैक आप भरेंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल से आप मॉड्यूल 2 में नहीं एंट्री कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिल द फीडबैक एटलीस्ट. उसके बाद आपको फीडबैक के बाद इन सारी चीज़ों को देखना है कि डिस्कशन फोरम हो गया है कि नहीं, क्विजेस 1 हो गया है कि नहीं, असाइनमेंट हो गया है कि नहीं, और फिर आपका फीडबैक भर गया है कि नहीं. मॉड्यूल 1 इज कंप्लीटेड. देन गो टू द मॉड्यूल 2, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन चार्टर एंड ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनेवा कन्वेंशन. So there is assignment. Wait a minute. So यहाँ पे आपको असाइनमेंट में जाके देखना है, और यहाँ पे आपको असाइनमेंट 2 होगा. और इसमें असाइनमेंट आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको लिख के आपको इसमें अपलोड करना है. देयर इज ए 10 MB रिक्वायरमेंट. 10 MB का होगा. सो मॉड्यूल इस तरीके से करना है आपको. सो और डिस्कशन फोरम इसमें भी है. सो लेट्स चेक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द सेटिंग, एंड यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको दिखने लगेगी. uh, yes, from today, save and display. So discussion forum is there. Add a new question. There is a there's a question you have to post your forum. This write down is there and post the forum. So this is a technique for discussion forum. Again back, and the feedback module 2 is restricted. It means आप जब तक डिस्कशन
आनंद सर घूम रहा था, क्या करना, हो गया, बता दिया, आप क्या बताना, एक भी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, पहले ये सब चीजें देखना चाहिए ना आदमी को। नहीं तो मॉड्यूल 1 में तो डालेंगे ना। अब डालने से क्या फायदा, क्या करें, थैंक यू कर दें। सारे एक ही चीज बताने के लिए सबको क्यों बुलाएंगे, हो गया, बताना ही तो था। अब सामने का क्वेश्चन डालेंगे, अजीब बात करते हैं आप भी मॉड्यूल में। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बता देंगे करना है। आप एक्सपर्ट हैं, नहीं नहीं, एक्सपर्ट की बात नहीं है, बात ये है कि कोई तरीका होता है काम करने का ना, इस तरीके से काम नहीं होता कि कभी भी रैंडम आए और मुंह उठा के चल दिए, कुछ भी बोल दिए, ये कराना है। तो हम भी देखिए 9 तारीख से मैं लगातार बैठ रहा हूँ ना, 2 दिन बैठना पड़ा, हो गया। कल आएंगी, कल तो हो गया ना वो उनका, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं माइंड से हम बोल देंगे अगर इस तरह से रहेगी, फोकस क्वेश्चन डालिए, बच्चों से बेस करें। अभी ऐसे ही छोड़ दो ऐसे करके, तो छोड़िए, बच्चा करते रहेंगे तो क्वेश्चन। तुरंत सिलेबस देख के बताइए कि मॉड्यूल सारे में, सारे में नहीं नहीं, अपना सेकंड सेकंड डालिए, सेकंड में पहला तो मॉडल पहला भगवान आना चाहिए। सर सर हम कल से पता है, कल ये बता दिया कि साढ़े 7 होगा, फिर सीधा होगा, हमें नहीं पता थी ये चीज़। नहीं, आपको तो बात, आपको क्लास में करना है, सुनिए ना, सभी चीज़ें तैयार की, बैठा नहीं, बोल नहीं, आगे कर मेरे आगे तो कौन आगे तो बस साड़ी में बहुत अच्छी लगती है ना सब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फोकस की स्पेलिंग क्या होती है? FOCUS। कितने नंबर का है ये फोकस, फोकस डिस्कशन नंबर का होता है? Please go to the discussion forum module 2 and there is a question, और आप इस क्वेश्चन पे जाके आपको रिप्लाई करना है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से फिर आप अपना डिस्कशन फोरम को करना शुरू करेंगे, देन विल सी देयर कि कितनी रिप्लाईज आई हैं। सो टुडे योर असाइनमेंट इज दैट यू हैव टू डू द डिस्कशन फोरम एज सुन एज पॉसिबल एंड टुडे इटसेल्फ, द टाइमिंग स्टार्ट नाउ, so we are waiting for this your answer.
ऐसे ही बोलना। Hello, dear participants. This side is Dr. Mohammed Chavez. Once again, welcome to you all in this value-added course, and I hope you are enjoying and you are learning very much from this value-added course, which is based on the human rights, a general perspective, right? So what we are going to do today that we are moving back towards the module one, and for the completion and for the completion of the module one, we need to do the various activities, including the question Q&A on the discussion group forum, and we may have another kind of the activities, including the quiz activities and assignment activities. Okay, right now we are heading towards to the discussion forum group, right? Okay, so what I did that I posted a question on the discussion forum in the module one, and you are supposed to answer it in a brief. Okay, so within a you have 25 minutes to answer it. So cover this module and answer in a on a section of the discussion group forum as soon as possible. Okay, so the 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 your appearance, your presence, and your activity in this regard will be highly appreciated, and it is also important in order to generate the certificates for this value-added course, right? So I am waiting here. If there is any problem you may face, you can answer, you can post it on the comment box, or you can either contact to the coordinator of this value-added course, right? Okay, so you are supposed to go here on ILI, and then I hope you are seeing my screen. So I am doing these things in front of you, that what you have to do, that you are supposed to go, you are need to go ilizone.in, right? And you, when you reach there, you will find the page which mention that the name of the value-added course, human rights, a general perspective. And when you reach that page, in the left side of your screen, you will find the module 1, and when you click module 1, you will find this module 1, module 2. Now you need to click in the module 1, and below this module 1 there is a introductions, meaning, nature and scope. This is the title of the module 1 and the content of the module 1, which you have covered in the beginning of this evaluated course, right? So after this there is a focus discussion forum module 1. You need to click on it, and you will have a questions over there, right? I think there is a technical problem. Sorry for the inconvenience. Now you can see my screen, right?
So we have reached on the focus discussion forum module 1, and in that I have posted a questions for you to answer it. Okay, so please visit this question. The question is, explain the meaning and importance of human rights. Right, we have covered this content extensively, and you might aware that how much time we have given on this exploring of this the concept of the human right. And we had also the separate lectures on the second of this valuated course on the need and importance of the human rights. So please go to the discussion forum group sections and visit this question, explain and meaning of human right, explain the meaning and importance of the human rights, and answer it within a 20 minutes. Okay, and when you complete it, please post it in the comment box, right? And if in case if you might have any problem regarding the appearance of the questions, or you may face the difficulty, if you are facing the difficulty in writing down the answer of these questions, you can also put it on the comment box, so or technical staff or technical staff or coordinator can see and resolve your try to resolve your conflict as soon as possible, right? So we are waiting here. Please do it as soon as possible, please.
Hello, students. I hope you are engaging in your activities, and I hope you are doing it and you are enjoying it by writing answer of the posted questions in the module one sections. For your kind information, I would like to aware you important notice that it has already been mentioned over the term and conditions for generating and for for getting the certificate of this value added course, that if you are not having the 75% of attendance, you will not get the certificate for this validated course. Secondary, if you are not completing all the activities, all the required activities from module 1 to the module 5, you will not able to get the certificate for this validated course. So be aware, be active, be attentive for each and every activities. Every day we have a lectures, and after completing the module, we have also the module activities, followed by the completions and followed by the lectures of every module. So please keep an eye, be regular, be attentive, and make your attendance regular, so by which you cannot avoid or you cannot forget to attend any activities of any module, right? So today we are doing the activities of module 1 right now. So for which in module 1 I have posted a questions on the discussion forum, and for this of this question you are supposed to answer uh, within a now you have only 15 minutes to answer these questions, and after this time, after 4 o'clock or 4 p.m, this questions may not be visible, so please answer it as soon as possible. I am here in case you, if you need any help or you are facing any difficulty regarding this question, appearance of this question, or difficulty in writing the answer of this question, you can ask by comments in the you can ask in by mentioning it in the comment box. We will aware about your problem, and we will try our best to resolve resolve your issues or problem as soon as possible. Thank you very much. We continue on attending this activity.
Hello, students, dear participants. As you are knowing that today we are completing our module activities. So before before me, it was Dr. Snelata who completed, who was involving in completing module second activities, and after her, this side is Dr. Mohammed Chavez. Since I covered the module one, in which we covered meaning, nature, and scope of human rights, and also in the beginning of this value-added course, we have covered this module one in two lectures, in separate day. On the first day, we covered meaning, nature, and scope of human rights. In the second day, we covered the need and importance of the human rights. So, in keeping mind all these content in the module one, so we have posted questions in the sections of the focus discussion forum module one, where I posted a questions, and the question is the explain the meaning and importance of the human rights, and you are supposed to answer these questions within a given period of time, right? So these activities you have to cover within a limited time, after 4 o'clock or after 4:30, or till 5 p.m. You have to answer these questions as soon as possible, and failing to attending these activities may create the difficulties in generating and getting the certificate for this value added course. So everyone needs to complete these activities. The attendance in these activities is compulsory, right? So please do not aware, be aware all those activities in each module. So in module one and in module second, we have posted both Sneha ma'am and and me have posted the questions in the discussion forum module, in the discussion forum sections. You are supposed to answer all those questions in module one and module second respectively, and rest of the module activities will be followed by the completion of the module and the special and the guest lectures. So in case if you might have any problem regarding the visibility of the questions, or you may have the difficulty in writing the answer of this question, you can post it in the comment box, so we can see and try your best from our side to resolve your problem and issue, right? All those who are not yet who have not yet joined these sessions, please inform them, kindly join this session regularly, and please make sure that you have attended all the activities of all the 5 modules, unless you will not get any certificate for this value added course. So please be cautious for all these activities, be regular, make your attendance regular on the ILI for this value added course, so we can generate your certificate for this value added course timely.